So friends, now we are discussing the very first chapter of your intermediate ICI module, that is the basic concepts. Let me clarify a few things before we move towards this particular chapter. The very first is, this is the first chapter we are discussing in our Companies Act curriculum, and let me clarify that this is purely a definitional section. So हम इस चैप्टर में definitions के तौर पे एक bird's eye view लेंगे उस कॉन्सेप्ट का, एंड फिर जब वो कॉन्सेप्ट एप्रोप्रिएट सेक्शन में आएगा तो हम वापस से यहाँ का रेफरेंस लेंगे और उसे और बढ़िया, बेहतर और डिटेल्ड तरीके से समझने का प्रयास करेंगे. सो फ्रेंड्स, बेयर इन माइंड व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ डेफिनेशन, it will be ready, limited, restricted to the definition itself. We will understand that provision in depth from all the nitty-gritties when it comes at the appropriate relevant provisions. Second friends, हम पहले कुछ एकदम important provisions जो है, जो subsections है जो section 2 के, यानी कि जो सबसे important definitions है उनको overview करेंगे, and फिर section 2 को chronological order में देखते जाएंगे. Further friends, one more thing to clarify is, in ICI module they have given whole section number 2, but in this video lecture I have tried to cover only those sections which are relevant for the intermediate level. So those definitions which are not at all relevant for the intermediate level are not being covered in this particular video. With this base, let us friends start with the different definitions, and let me clarify at this juncture that mainly there are three types of companies as far as their nature is concerned. One is the one person company, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. ज्यादातर सेक्शन 8 कंपनी है, निधि कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी, काफी सारे हैं, पर जब हम बात करते हैं बेसिक प्रकार की कंपनीज के तो वो तीन है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. नाउ फ्रेंड्स, व्हेंस वी हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज ऑफ द कंपनी, देन यू कैन से दैट एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस अ ग्रुप ऑफ पर्संस. इफ यू टेक ओपीसी तो 1 मेंबर 1 नॉमिनी, प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स, which is formed and registered in accordance of this act or any other previous law for time being in force is known as a company. जैसे कि फ्रेंड्स, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अगर पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक होता है वो पार्टनरशिप कहलाता, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता. तो जब वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक है तो फिर वो क्या कहलाता है, कंपनी. एंड दिस इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. The another important point is the definition of relatives, which is very useful when we want to decide that who we can be the members in a private company. Then कई बार related लोगों को हम अपॉइंट नहीं कर पाएंगे तो relatives का definition काफी important हो जाता है. तो 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक स्पाउस, दूसरा मेंबर्स ऑफ HUF एंड तीसरा रूल्स के मुताबिक. रूल्स में अगर हम मेरी बात करें तो मेरे ऊपर का लेवल यानी मेरी मदर एंड फादर, मेरा सिमिलर लेवल यानी माई सिस्टर एंड ब्रदर, मेरा बॉटम लेवल यानी माई सन एंड माई डॉटर, एंड माई डॉटर ने जिसका हसना बनकर है यानी उसका हस्बैंड, एंड मेरे सन की जो मून है